All right. So I will just redraw that so that वही बोर्ड खोल लीजिए ताकि आपके लिए आसान हो। वो बोर्ड कर सकते हैं, quite possible. Let आपके me लिए आसान just हो जाएगा yeah, उससे। let me just redraw that so that यही फिगर है जो समझने वाली है हम्म और डेफिनेशंस हैं जो समझने वाली है। आई थिंक इफ यू अंडरस्टैंड दीज देन इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड। वैसे तो मुझे डायरेक्टली भी आता है, बट आई जस्ट वांट टू टेक यू इनटू थोड़ा सा डिटेल में। व्हाट वाज द यस नेम ऑफ दैट बोर्ड यार? वो तो याद Oh नहीं। yeah, okay. Was it this one? I think I had a name. Should not be the maths. Omega square. ये नहीं था. This नहीं is moment of inertia. हम्म, Not this one. Uh, moment of inertia. Bar magnet. No. Earth's magnetic field. Okay. ये तो मैंने अभी नाम रखा है. आया? Anyway, हाँ let's use the previous figure. Okay. Okay. So now, what is our aim? We will be हम अर्थ के ऊपर हैं, we are on earth, and what is our aim? That at any location on earth we want to represent magnetic field. I told you, right, two scientists talking to each other will have to tell the earth's magnetic field at their respective position, but they will use three terms to explain the magnetic field at their location. एक word यस होता है declination. सर Okay, the other is uh, the angle at which the field makes with the horizontal. It is called dip, which is what we saw on the globe, जहाँ पे जो magnetic needle है वो घूमती जाती है. So घूमती there are जाती है। first word, remember, declination. हम्म Second word, inclination or the magnetic dip. हम्म, Third word you have to remember is intensity. ठीक है। Right, so whenever you discuss and you can see there is a coordinate system that has been created, which is also called as x is a northerly and y is easterly. So there are multiple coordinate system. The ones which we are interested in, these three, हम्म हम ये वाला नहीं पढ़ते हैं. So we will study Earth's magnetic field, and there is a three-dimensional vector that represents it. First is known as the declination. And I told you it's no point drawing the circles again and again. तो आप यस सर देखो declination क्या है. Okay, let me just show you the declination. If you notice, so there is a geographic north and there is a magnetic north. नॉर्थ हाँ तो अगर आप अर्थ के ऊपर घूमोगे, if you move around earth, okay, what you will find is this. Let me just show you. Magnetic declination is the angle between the magnetic axis and the geographic axis. But क्योंकि मैंने बता दिया, we will use two papers as a vertical planes passing through them. So the angle is between the magnetic meridian, which is nothing but a paper going through the magnetic axis, and the geographic axis. ओके Let me. Okay. And remember that what happens is you may think that declination, that the angle between the axis is 20 degrees. बोला भी था मैंने, if you remember, right? यस सर But remember the declination has one property which is not written but is known to most, that it changes with time, हम्म right? And it also varies from place to place. तो ये जो 20 degree हम general बोलते हैं, that's a rough average of declination. It is not true that declination अगर 20 degree मैंने बोल दी तो जहां भी मैं खड़ा हूं वो 20 डिग्री मिलेगी. नो, अच्छा जस्ट बी वेरी क्लियर ऑन दिस, राइट? पहले हम बोलते हैं कि 20 डिग्री है, फिर बाद में बोलने लग जाते हैं कि चेंजेस, राइट? सो द डिक्लिनेशन जो है बेसिकली वो क्या होगा, जहां भी आप खड़े हो
अर्थ के ऊपर, right? So that point, when you're standing on that point and you want to find how the two poles are aligned with respect to that point, that will tell you the declination of that point. So don't worry about जो मैं बोल रहा हूँ, okay? The mood point I'm trying to tell you is declination is a function of place where you're standing. So let me tell you in US, say for example, okay? So that you get just not a definition. If you're in America and you say, okay, I am, for example, look at this lines, right? All these lines, the declination is common. Agreed. दिख रहा है ये लाइन में? तो अमेरिका में अगर आप इस पाथ पे जाओगे, your declination will be same. So whenever we represent Earth's magnetic field, declination is also shown at that place. Inclination भी एक और चीज मैंने आपको बताई, intensity भी बताई, but फिलहाल our concentration is. So remember, although there is a feeling you may have कि we have this geographic meridian which I can draw like this, and I can draw another inclination which is, sorry, this is geographic meridian. I can draw another magnetic meridian, and there may be some little angle between them. Okay, so there is some little angle between them, right? Remember, this angle is not fixed. It changes on the planet. ये एक मोटा मोटा है कि 20 डिग्री है एवरेज, बट ये दिख रहा है 15, 10, 0 डिग्री. This line is known as agonic line. So on the agonic line, there is no angle between them. Yes, sir. Right? So this is going to change. Agreed. Okay. So some facts for you. बहुत से बड़े बच्चों को ये would not know a lot of this. Okay, just what else would you? So जहां भी आप खड़े हो वहां से आप पहले देखो कि ट्रू नॉर्थ कहाँ पे है. फिर आप देखो कि जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो कहाँ पे है, और उन दोनों के बीच में एंगल निकाल लो. दैट्स योर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. Okay. And it changes with time. So we don't need to get into that level of detail. Time, वो पूरा, we are not studying magnetism. We are just studying 12th standard course. Simple answer, magnetic north and true north के बीच में, या geographic meridian और geographic meridian और magnetic meridian के बीच का जो angle है, it keeps on changing on the earth depending on where you are on the earth, and it also changes over the time. It is fluctuating. ठीक है. ठीक है जी. So if you are close to the poles, you will find the angle is very steep, and it is given a very exaggerated picture of the angles. Okay. ये समझ में आ गया changes? हाँ, समझ गया. ठीक है, बहुत है इसके लिए, राइट? सो जस्ट अर्थ पे आप कहीं भी हो तो आपको पता होना चाहिए कि आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू. Okay. Okay, and this is telling you as the time has progressed over last 100 years. Okay, how the declination has undergone in various centuries. So remember, nothing is मतलब as in हो गया जी, फिक्स हो गया, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर. ठीक है. Tell me if you can see the screen now. नहीं सर. No, this is a. Can you see now? हाँ, देखिए. Now look at this. So there are lines on Earth showing you declination, but see the year on top. 1500 से दिखा रहे हैं. 1500. हाँ. Can you see the उस जगह पे जो एंगल आ रहा है नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के बीच में, वो एंगल है. तो पूरे अर्थ पे अलग अलग है. So no fixed criteria. Yes, sir.
All right, I'll just be back. इतना पता होना चाहिए what exactly it depicts. It depicts at that point on the earth, it represents the angle between the uh, geographic meridian and the magnetic meridian. Hmm. ठीक है जी. All right, let's go to the next point. Okay. Now the next point is the inclination or the magnetic dip. Okay. Facing magnetic north, the angle the field, Earth's field, makes with the horizontal. ये बड़ा important है. Hmm. Used in numerical. The angle the field makes with the horizontal is the inclination of or the magnetic dip. तो पहले पढ़ते हैं हम declination, जो एक बड़ी broad term है. अर्थ के ऊपर आप कहाँ खड़े हैं और उस पर डिपेंडेंट है. अगली जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो है द एंगल द फील्ड, मतलब द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल. तो आप देखो ये इंक्लिनेशन देखो. सो दिस इज योर इंक्लिनेशन. Hmm. हॉरिजॉन्टल प्लेन ये है ना. हाँ. अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे जा रहा है. हॉरिजॉन्टल प्लेन तो ये है ना, ये जो Correct. पेपर है ये वाला ऊपर. Hmm. तो अगर आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन ये है तो उसके साथ जो एंगल अर्थ बना रही है इज कॉल्ड इंक्लिनेशन. 3D में है, उस साइड जा रही है. ठीक है. क्लियर है. हाँ. ठीक है ना. तो जब भी जैसे क्वेश्चन आए द कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल component of Earth's magnetic field, keep this Hmm. diagram in the mind and you can easily find the horizontal component. Okay, ये एक component है और एक vectors. Hmm. ये Yes, sir. horizontal में उसका component Hmm. और ये वाला दूसरा है ठीक है. triangle. Hmm. न्यूमेरिकल करेंगे आ जाएगा समझ में. Yes, sir. Okay. Now, what about the third element of a Earth's magnetic field? Now, that is called as the intensity itself, which is this. Hmm. So, okay, if you look into it, you know, see the uh, declination is an angle. Hmm. Yes, sir. Declination and dip. तो आप जब अर्थ पे खड़े होते हैं तो आप ऐसे बोलते हैं कि यार जहां मैं खड़ा हूं वहां पे नॉर्थ पोल और नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, नॉर्थ ज्योग्राफिक पोल और नॉर्थ मैग्नेटिक पोल के बीच में इतना एंगल है. एक ये बताता हूं मैं लोगों को. द Hmm. सेकेंड थिंग आई नीड टू मेंशन इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज मेकिंग दिस मच एंगल with the हॉरिजॉन्टल. Hmm. दो तो मुझे एंगल बताने पड़ते हैं Yes, sir. लोगों को अपना मैग्नेटिक फील्ड समझाने के लिए. तीसरा ऑब्वियसली मुझे ये बताना पड़ता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड है कितना. Hmm. दैट इज इंटेंसिटी. Yes, sir. So if this was the intensity, I have to tell about this also. Then I have to tell the intensity angle with the horizontal. And I also need to tell the world where I am on the earth. मैं खड़ा कहाँ हूँ अर्थ पे. तो Hmm. जैसे ही मैं लोगों को अपने कोऑर्डिनेट्स दूंगा कि my declination is this much and I'm in Australia or this and this. So every country has their own map of declination. Declination का Yes, sir. मैप होता है हर कंट्री का. हाँ. तो आप उसमें अगर आप मैं आपको बोलता हूँ मैं खड़ा हूँ ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे, तो यू कैन सी इन सॉफ्टवेयर वेयर एग्जैक्टली आई एम ऑन इन ऑस्ट्रेलिया. ऑब्वियसली डेक्लिनेशन एक लाइन में होती है तो मैं उस लाइन में कहीं भी हो सकता हूँ ऑस्ट्रेलिया में. Hmm. सो आई विल देन हैव टू डिफाइन अदर क्वांटिटीज, देन यू कैन पिन पॉइंट मी. ठीक है. डेक्लिनेशन तो यू कैन सी ना, इट्स अ पूरा Hmm. कैन बी अराउंड 3000 किलोमीटर्स. सो Yes, sir. कहीं भी हो सकता है. तो आई हैव टू टेल थ्री थिंग्स टू बी एबल टू पिन पॉइंट. Hmm. So, matlab, if you want to study about magnetism of Earth, it is important to study three aspects which we've just discussed. Hmm. Declination is an angle, dip is an angle, intensity is its magnitude. Directional, कहाँ पे पढ़ रहे हो? Declination.
कितने एंगल पे खुद डिप, वैल्यू कितनी है इंटेंसिटी। अर्थ पे कहां पे स्टडी कर रहे हो आप मैग्नेटिक फील्ड को, व्हाट एम आई आस्किंग यू, डेक्लिनेशन। क्लियर है? यस सर। जस्ट मेकिंग इट इजी फॉर यू टू हाँ काफी अंडरस्टैंड, एक लेमैन लैंग्वेज में, जैसे कि बड़े ऐसे याद कर 100 ways to remember, but to me I find this easy. Okay, so inclination is the angle measured from horizontal. हाँ So if I tell you fill in the blanks, okay, inclination is an angle, you know that, but inclination as an angle is measured from, fill in the blanks, horizontal. ठीक है। वो डायग्राम क्यूब याद होना चाहिए। Declination is measured from where is declination measured from? Declination is measured from geographic north. कोई रेफरेंस तो होगा ना कहां से भाई, measured from what? ठीक है, इट इज द एंगल बिटवीन द जोग्राफिक नॉर्थ, मैंने सीधा सीधा मानते हैं ना ऐसे, मैग्नेटिक नॉर्थ थोड़ा तिरछा है। यस सर। तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट है वो जोग्राफिक नॉर्थ को फिक्स माना जाता है, क्योंकि वो जोग्राफिक है, वो अर्थ के ऊपर है वहां पे। और मैग्नेटिक नॉर्थ जो है उससे कितनी दूर हो जाता है, दैट एंगल। सो डेक्लिनेशन इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू जोग्राफिक नॉर्थ। वैसे तो डेफिनेशन वाइज व्हाट इज डेक्लिनेशन, इट इज एंगल बिटवीन द जोग्राफिक एक्सिस, नॉर्थ पोल भी उसी के ऊपर लाई करता है। बट डेक्लिनेशन की मेजरमेंट कहां से होती है एक्चुअली, फ्रॉम द जोग्राफिक एक्सिस से कितने टिल्ट पे हो, द मैग्नेटिक एक्सिस कितने टिल्ट पे है जोग्राफिक नॉर्थ से, वो गिना जाएगा। ऑब्वियसली जोग्राफिक नॉर्थ अकेला नहीं होगा, दोनों इकट्ठे ही होंगे, नॉर्थ और साउथ। ठीक है ना, तो मेजरमेंट यहां से चालू होती है, दिस इज जीरो। इफ यू आर ऑन पोल्स, इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन अ पोल, योर डेक्लिनेशन इज जीरो, एंड दैट इज व्हाई इफ यू रिमेंबर वो सुई जो थी ऐसे बनी हुई थी वर्टिकली, बिल्कुल इसके ऊपर ऐसे बनाई थी, तो देयर इज नो डेक्लिनेशन देयर। ठीक है। जैसे जैसे नीचे आओगे तिरछी होती जाएगी और आपका डेक्लिनेशन आता जाएगा, बट देखते हैं, वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल। अभी देखते हैं क्या होता है। Okay. That is a very prominent question which is asked. ठीक है। So intensity, what is intensity? If you just notice, if you just go to it, what is intensity? What is it proportional to? The force it exerts on magnet. तो मैग्नेट भी हाथ में रखना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है कितनी फोर्स लगाई है, यस सर। तब मालूम चलता है कितना ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे, हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज। Strength, angle, location, all three are important. Understood. Okay. So if you just want to see a okay. Something very similar, but more pictorial दिखा रहा हूं मैं, सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। So see this very carefully, that वही डायग्राम है,
दिस इज योर नॉर्थ, तो नॉर्थ से कितने परे हो वो ये रहा डेक्लिनेशन, क्योंकि आपके हाथ में तो कंपास होगी और यस सर। कंपास तो अपने आप को अर्थ के मैग्नेटिक एक्सिस के अलोंग इंक्लाइन करेगी, और आपको जोग्राफिक नॉर्थ जो है उस जगह पे पता होगा किस साइड पे है, वो फिक्स्ड होता है अर्थ का, राइट? ये आपको करेक्ट। पता है जोग्राफिक नॉर्थ का है अर्थ का, और आपके हाथ में कंपास है जो ऐसे लाइन होती है अलोंग द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक तो है। ये एंगल आपने नाप लिया, डेक्लिनेशन। यस सर। इंक्लिनेशन, यू नो द इंटेंसिटी नीचे हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल इज दिस, लुक एट दिस, दिस इज अ वर्टिकल कंपोनेंट जो मैं ये बता रहा था, ये यूजलेस है, ये तो अर्थ के अंदर जा रहा है। यस सर। So generally when you see the questions, our emphasis on the question is here, the horizontal component. Okay, so look at this. Angle measured from the north. So this is your north, and this is your magnetic. So ये आपका आ गया declination. अब उस साइड से दिखा रहा है इसी फिगर को, इस साइड से। If your eyes are here, how will it appear? It will appear like this. ये arrow जो है ऐसे नजर आएगा। अब उस साइड नजर आ रहा है ना आपको, behind the box. इधर इधर से देख रहे हो ना अभी तो। यस What सर। if you see from here? हाँ यस सर। उल्टा दिखा रहे हैं बस, that's it. ठीक है, ठीक है। इतना भी समझ आ जाता है तो इट मेक्स सेंस। कीवर्ड रिमेंबर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वर्टिकल कंपोनेंट, बिकॉज वर्टिकल कंपोनेंट की क्या वैल्यू है, वो तो जमीन के अंदर चला गया। तो जो भी कुछ होता है अर्थ के ऊपर, इट इज बाय वर्च्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अंडरस्टूड। और कंपोनेंट निकालने के लिए कौन सा एंगल यूज करोगे, डेक्लिनेशन या इंक्लिनेशन? कंपोनेंट निकालने। हाँ, कंपोनेंट्स अगर निकालने, इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन सही है ना। यस सर। डेक्लिनेशन तो जगह बताता है भाई, और मैं यार यहाँ खड़ा हूँ जी, नॉर्थ पोल के मुकाबले इतना टेढ़ा हूं मैं। यस सर। ओके, ठीक है। ऑलराइट। Now, since you know the value of the declination and in inclination, and you want to find the values, you can easily do that. If you know the total intensity of the, मतलब आप सारे निकाल सकते हो। If you know the perpendicular components, मान लो आपको horizontal component मालूम है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि वही नपता है, और एंगल भी मालूम है आपको इंक्लिनेशन का। अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मालूम है तो वर्टिकल कंपोनेंट भी निकाल सकते हो, यस सर। राइट? एंड सो ऑन। सो एसेंशियली इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन वन प्लेस, यू कैन फाइंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ओके, सब कुछ निकाला जा सकता है। वी विल कम टू द मैथ्स कैसे, ठीक है। बट पॉइंट इज, क्योंकि अब हमें समझ में आ गया क्या क्या हमें नापना है। वो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं, फलाना हम नाप लेते हैं, और है तो 90 डिग्री के सारे एंगल। इफ यू नोटिस एवरीथिंग इज 90 डिग्री, राइट? 90 मतलब डिग्री। एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा कॉस थीटा खत्म। गेट द आंसर, राइट? अंडरस्टूड। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, so if you know the angle of inclination, b cos delta, if delta is the angle of inclination at some place, and the b is the magnetic field there, then b cos delta is the horizontal component of Earth's magnetic field. ठीक है ना? थिंक इन टर्म्स ऑफ पोल्स एंड, तो आप देखो पोल में से मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो बिल्कुल सीधा ऐसे निकलेगा, डायरेक्ट, हाँ। राइट? तो हम बोलते हैं कि भाई जो डेक्लिनेशन है,
शुरुआत में जब निकलता है मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द मैग्नेट ऑफ अर्थ, सो इनिशियली व्हेन इट मूव्स इट इज पैरेलल टू द अर्थ्स ज्योग्राफिक नॉर्थ, बिल्कुल पैरेलल होते हैं शुरू में जहां से निकलता है. देयर अच्छा. इज नो एंगल टू स्टार्ट विद. सो ऑन द पोल डेल्टा इज जीरो. सो वेर सो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड निकला ना यहाँ से, हम्म. बिल्कुल स्ट्रेट निकलता है, मतलब पैरेलल टू द ज्योग्राफिक नॉर्थ. ठीक है. तो ऑन द पोल्स डेल्टा इज टेकन टू बी जीरो. 0. राइट. सो दिस इज द एंगल ऑफ, इसका दूसरा नाम डिप है ना. हम्म. So 0 degree, which means if you see this box, I will correct myself. मैं inclination के बारे में बात कर, declination बोल दी मैंने गलती से. अच्छा, ये मैं जो ध्यान नहीं दिया. एंगल है ये वाला, बिकॉज मैंने एंगल का मुझे लोकेशन की परवाह नहीं होनी चाहिए. When I'm studying the component, I'm not worried about where I'm standing. When I talk about component, my worry is inclination. हम्म. When I say the inclination is zero, so this angle is zero, right? From the Yes, sir. horizontal. तो कहने का मतलब जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल के अंदर ही होता है यहाँ पे. हम्म. इस समय नीचे की तरफ गया ही नहीं ना, इंक्लिनेशन हुई कहाँ. हम्म. जिस प्लेन में ये आपका प्लेन है और आपको दिख रहा है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है जनरली इट इज फ्रॉम दिस डायगोनल टू दिस डायगोनल, मान लो, है ना. हम्म. तो और ये हॉरिजॉन्टल है, लेकिन अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किसी जगह पे यहाँ आ जाए तो हॉरिजॉन्टल के अंदर ही रह जाए, इंक्लाइंड होके नीचे जाए ना, हम्म. ऊपर ही रह जाए, तो दैट डेल्टा इज जीरो. एंड दिस बिहेवियर इज नोटिस्ड एट पोल्स. तो सो आई वाज नॉट राइट. मैं गलती से व्हाट आई सेड वाज अबाउट डेक्लिनेशन. So this is not declination, we're discussing dip, angle of dip. सुई जो है मैग्नेट, जो कंपास की, वो ऐसे हो जाती है, इट डिप्स, ठीक है. डिप हो जाता है उसके अंदर. ठीक है. तो वाकई में वो सीधी नहीं होती, वो ऐसे डिप हो जाती है. लेकिन ऑन द पोल इट विल बी स्ट्रेट बिकॉज इट इज इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन. सो एट द Okay. पोल इट इज स्ट्रेट. एज यू स्टार्ट गोइंग डाउन इट स्टार्ट्स डिपिंग, टेढ़ी होने लग जाती है, एज इफ कोई टर्न कर रहा है उसको. अच्छा. Okay. And at the equator, when it reaches equator, delta is equal to 90 degree. So this is your magnetic, just wait, I think delta is equal to 0. The angle of dip is delta is equal to 0 at equators. Why I was wondering here, at equator, which is the big circle around the earth. Delta is equal to 90 is at the poles. So वहां पे I was right because I knew, लेकिन I word used wrong language. वहां पे because the magnetic field is coming straight, right, from the earth. तो सुई को तो अलाइन उसी के साथ होना है ना. Yes, sir. तो कंपास की जो रेड वाली पार्ट होती है ना, वो ऊपर वाली पार्ट जो होती है रेड वाली, वो भी ऐसे हो जाती है. अच्छा. तो आपकी जो कंपास है वो जनरली तो ऐसे होती है. It comes like this because it has to align itself towards the magnetic pole. It gets attracted ना, unlike poles. Yes, sir. Geographic north वाली साइड पे magnetic south है. Magnetic south, तो अर्थ का नॉर्थ पोल उस geographic नॉर्थ की तरफ चला जाता है क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक साउथ होता है. ठीक है. उल्टे होते हैं ना मैग्नेटिक, जहां पे मैग्नेटिक, जहां पे नॉर्थ अमेरिका है वहां पे अर्थ का मैग्नेटिक साउथ है. तो अगर आप कंपास लोगे तो वो नॉर्थ पोल उसका मैग्नेटिक साउथ की ओर जाएगा ना, नॉर्थ अमेरिका की तरफ. तो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है. तो दैट इज व्हाई एट, इफ यू कंसीडर दिस डायग्राम वेयर यू हैव हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड सो फार यू वर अज्यूमिंग दिस टू बी अ केस ऑफ इंटेंसिटी एंगल व्हिच इज डिप एंगल. सुई थोड़ी नीचे चली गई है. अगर ये 90 डिग्री हो गई तो सुई ये हो गई ना फिर. यस सर. हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री, ये वही है. दिस इज द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल. ठीक है. ये हॉरिजॉन्टल है ऐसे. As you start moving from the pole towards the equator, you know the Earth's magnetic field behavior, right? So if this is your situation where this is your magnetic south and north, and the behavior is this.
पोल टू पोल, तो yes sir, यहाँ भी स्ट्रेट, यहाँ भी सुई स्ट्रेट होगी. बट इफ यू सी दिस पार्ट विच इज द इक्वेटर, राइट, द मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस. अगर याद हो हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी में, हाँ फील्ड लाइंस के टेंजेंट, राइट. सो इफ आई ड्रॉ टेंजेंट हेयर, right, it is becoming parallel to the magnet itself. Parallel हो yes sir, गया. So instead of right angle it becomes parallel, so it comes entirely in the horizontal plane. तो यहाँ आ जाती है सुई बिल्कुल straight. ठीक है, So what started as like this gradually turns, and then when it reaches the equator, I'm sorry यार, एक मिनट, just give me 1 second. ये फिर वही शुरू हो गया, एक second. Okay. I'm just restarting the board, okay? okay, So this needle at North Pole is 90-degree inclined with the horizontal, and now it starts turning. At equator, it becomes parallel to the Earth's magnetic field, or we say the angle of dip is now 0. There is no dip in the needle. अभी needle जो बिल्कुल straight होती है, जैसे हाथ में रखते हैं, बिल्कुल straight होती है ना, dip नजर नहीं आता हमें, वैसे dip होता है हर जगह पे. So there is a yes sir, chart of dip also available. If you are standing somewhere, right, not only you are able to find the angle between the which is your declination with respect to the geographic north, but this compass, if it dips, also tells you कितना नीचे, वो भी पता चल जाता है हमें okay, डिप ठीक के है, बारे में, एंगल ऑफ डिप. ठीक है सर, ठीक है, वो भी पता चल गया, डेल्टा मालूम चल गया, मतलब if this enters your mind, then it's not difficult. For the by chance, unfortunately, we don't have a compass and all that. Otherwise, I would have shown it to you. There is a dip meter available in the labs. So the dip meter is used. वो एकदम आपको बता देगा कि कितनी बेंडिंग हो गई है उसकी. अच्छा, It looks something like this. So obviously you won't get an opportunity, but भाई आपकी छत अभी बिल्कुल स्ट्रेट है ना आपके सर के ऊपर. छत अगर ऐसे डिप हो जाए, एक साइड से झुक जाए, yes, दैट्स योर समझ डिप. गया, ये देखो आपकी जो सुई होती है मैग्नेट कंपास की, इट, so this is the dip meter I was referring to. Okay, okay, look at the horizontal से shift होके नीचे देखो, the it is normal. ये सेकंड फिगर में this is a normal horizontal, but ये तो थोड़ा टिल्ट हो गया ना थोड़ा सा yes sir, ऐसे, तो वो टिल्ट जो है यहाँ से नापा जाता है हॉरिजॉन्टल से, ठीक है, डेल्टा. सो डिप मीटर टूल बोलते हैं इसको. इट्स अ मीटर. okay, सो इट हैज मेनी कैपेबिलिटीज. ये आपको सारे एंगल बता देगा, वर्टिकल से भी बता देगा, इससे भी बता देगा. सो ओके, और कौन सा हमारे पास बचा, बी आर लेफ्ट. ओके, सो लेट्स से नाउ at a certain point, with the help of the knowledge of delta, which is the angle of dip or inclination. Declination का कोई खास मेजरमेंट है नहीं, वो तो लोकेशन समझाने के लिए होती है. Where are you on the planet? yes sir, Right. So BH becomes equal to B cos delta, and BY becomes equal to B sin delta, and B, so this is vertical divided by BY is equal to tan delta. So this is 1 and 2, 1 divided by 2,
and so you if you know BV and BY, you can get the delta at that place. If you add and square and add these, you will get BH square plus BY square is equal to B square cos square delta plus B square sine square delta, or B square is equal to BH square plus BY square. So B is equal to under root of BH square plus BY square. Okay. So आपको मतलब if you tell someone about the magnetic field of Earth at a point, you have to tell them there are meters available, right? We don't need to worry about it. Declination समझानी पड़ेगी, dip समझाना पड़ेगा और B बताना पड़ेगा. If you tell three things to someone, then you have explained them everything about the magnetic field of Earth. So there are like I showed you that diagram जिसमें वो टाइम के साथ जो declination है वो बदल रही है. तो जब भी हम आप कभी भी you can go to YouTube, you can go to Google, and you can see so a magnetic map of Earth is given in which different lines so complicated are seen. So there are isogonic lines which we just saw. Then there are isoclinical lines and there are isodynamic lines. Okay, so अर्थ को मैप करा हुआ ऑलरेडी. हमें मालूम है ना ये इंडिया है, ये असम है, ये है. Yes, उसी तरह हमें अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में सब कुछ मालूम है. मैग्नेटिक चार्ट्स आर अवेलेबल. कैन गो एंड स्टडी व्हाट इज व्हाट ऑन अर्थ्स मैग्नेट. अर्थ प्लैनेट पे मैग्नेट जो है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे, कितना है, कहाँ पे, कितने एंगल पे, सब मिल जाएगा. Yes, sir. Right, and then that is where the question comes. You know, the horizontal component is zero at poles and maximum at magnetic equators. Horizontal component, which is B cos delta. So poles पे 0 degree है और equator पे 90 degree है delta. Obviously, Yes, sir. horizontal component तो pole पे ही सबसे ज्यादा होगा. Cos 0 Correct. और equator पे नहीं होगा. Okay. This is one. We don't need to study the temporary variation of Earth's magnetic field. मौसम नहीं पढ़ना. We are not into meteorology. We are not studying that level of detail. इतना काफी है. Declination, dip and horizontal component. Done. हो गया. ठीक है. Now another very important concept. That concept is of neutral point. It is very something similar to what you find in electrostatics, where the resultant of the dipole becomes zero. Neutral point. Okay, जैसे electrostatics में आता ना ये. This is minus Q plus Q. Where should the third charge be placed so that it experiences no force? X निकालो जी. ठीक है जी, निकाल लेंगे. तो वो neutral point due to a bar magnet if you study. Okay. So first of all, what is a neutral point? It's a point where the magnetic field due to the magnet is equal and opposite to the Earth's horizontal magnetic field. Earth का तो magnetic field होता है ना हर जगह पे. So if you want to find out the neutral point, then you are talking about neutral point of a bar magnet. Okay, which is where is that the bar magnet is capable of cancelling Earth's magnetic field. So what you find when you study Earth's bar magnet का magnetic field, there are certain points where you expected the field to be there, but what you find is does not exist. नहीं होता, क्योंकि चारों तरफ अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वो भी एग्जिस्ट करता है. तो कहीं ना कहीं इन दोनों की कैंसलेशन हो जाती है. दैट पॉइंट वेयर द magnetic field due to the bar magnet is getting cancelled by Earth's horizontal component. Earth का vertical component कोई काम नहीं करता, नीचे है सीधा. So whatever cancellation happens of the magnetic field due to a bar magnet happens only at neutral points. Okay. ठीक है. So these are the points where the magnetic field is zero with respect, मतलब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और उस जगह पे बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को
कैंसिल करेंगे, जीरो आंसर आता है वहां पे. So which means if you keep a compass there, you will see no movement. Magnetic field ही नहीं है. Yes, sir. ठीक है. So first situation, if you keep the so generally the magnetic field, if we draw that magnetic field, it is north to south like this. North to south. Or this is north, this is south. So if you find out in reality what happens, ये वाले जो point है ना दो, Hmm. बार मैग्नेट के परपेंडिकुलरली, बार मैग्नेट तो ये है, Yes, sir. ये जो दो पॉइंट दिख रहे हैं इसके लेफ्ट और राइट पे सेंटर एक्सिस में, Hmm. these are the neutral points. यहाँ कुछ भी नहीं पाया जाता. So if you keep a compass here, no magnetic field is observed. Okay. ठीक है. अभी आपने इसको रखा है, नॉर्थ पोल इज टुवर्ड्स अर्थ नॉर्थ एंड साउथ पोल इज टुवर्ड्स अर्थ साउथ. Hmm. Okay, and if you find out, so this is your magnet का equator line है ना, ये वाली तो perpendicular. So this is equator. And if you do the same thing for yes, but if you do the same calculation on the axial point, which is this, Hmm. you will find that the Earth's magnetic field and bar magnet's magnetic field get added. Hmm. So on the axis, you will find more than required, more than expected magnetic field, क्योंकि addition हो जाती है. But Okay. remember the condition: the north pole of bar magnet is in north direction. उल्टा नहीं रखा हुआ मैंने, रखा ही ऐसे कि ऐड हो दोनों के दोनों, नॉर्थ फेसिंग नॉर्थ. Hmm. तो आपके हाथ में है ना, आप कैसे रख लो. Hmm. Yes, sir. So you can place your magnet in multiple ways. Hmm. The other way to place this is उल्टा कर दो. Okay, so remember in equatorial plane, equator, what was the formula of equator? अभी हमने derive भी करा था, mu naught upon 4 pi m r square plus l square raised to power 3 by 2, and L is less than equal to R. So B equatorial is equal to mu naught upon 4 pi multiply by m upon r cube. Okay. Approximation हो गया ना, ये जीरो बना दिया. So this is your B equatorial. So remember, if you keep a bar magnet and then you start moving around with the compass and you find points on the axis where the compass shows no movement, Hmm. then you're 100% sure कि इस जगह पे जो बार मैग्नेट का जो वैल्यू है इक्वेटोरियल वाला, वो न्यूट्रलाइज किसने करा? अर्थ ने. Hmm. और आपने बार मैग्नेट का इक्वेटोरियल लाइन पे निकाल रखा है कैलकुलेशन से, तो आपको मालूम चल जाएगा उस पॉइंट पे अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है. ठीक है. ये बार मैग्नेट का है. Hmm. अगर इक्वल एंड ऑपोजिट पी और क्यू पे इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड्स मिल गए, Hmm. तो ये जीरो हो जाएगा, इक्वल टू जीरो. Yes, sir. इसका मतलब उस जगह पे अर्थ का कितना था? सेम मैग्नीट्यूड था लेकिन Same उल्टा था. था. Hmm. तो विद द हेल्प ऑफ अ न्यूट्रल पॉइंट यू कैन टेल कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वहां पे कितना है. Hmm. कैंसिलेशन. Hmm. ठीक है. Yes, sir. And if you know Earth's magnetic field at that point with the help of instrument, then put it equal to BH. Hmm. And then write it as B cos delta. ठीक है. If you know delta from instrument, you know B from instrument.
यू नो आर, डिस्टेंस तो नाप लोगे ये वाला, दैट इज नो बिग डील सेंटर से। यस सर। हम्म। म्यू नॉट आपको मीडियम का पता है, यू कैन फाइंड द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द बार मैग्नेट. ठीक है। So you going to say B cos delta has become equal to mu naught 4 pi m by r cube because of cancellation. There is nothing visible. The अर्थ का कंपोनेंट है, ये बार मैग्नेट का इक्वेटर पे कैंसिल हो गया, आंसर इज 0. इंस्ट्रूमेंट से बी नाप लिया, इंस्ट्रूमेंट से डेल्टा नाप लिया, परमेबिलिटी मालूम है, म्यू ये मालूम है, ये भी मालूम है, डिस्टेंस भी नाप लिया फुट्टे से, एम निकाल लिया. सो यू कैन फाइंड एम. यस सर। यू कैन से कि ये बार मैग्नेट का इतना है. सो यू कैन डू एनीथिंग. Such numericals will come. ठीक है। Okay, now let's talk about the second situation. Okay, the second situation is if you have a south and north, and now I'm keeping it reverse. अच्छा। Ulta. हम्म। Okay. Now what will happen is the cancellation will be seen here. हम्म। ये रहे. तो अब जो आपका फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा B axial will get cancelled, and this is R. So L is very, very small as compared to R, and B axial is equal to mu naught upon 4 pi into 2m upon r cube. डबल हो गया ना, देखो वैल्यू में, ऊपर m था सिर्फ, अब 2m आता है इसमें. यस सर। ये डेरिवेशन करी थी हमने एक्सियल वाली, सोलेनॉइड के साथ जो था, एक्सिस था ना वो. सोलेनॉइड की जब हमने ऊपर अभी डेरिवेशन करी थी प्रीवियस क्लास में, तो अलोंग द एक्सिस. ये वाली थी 2m वाली, और 2 का कंफ्यूजन हो रहा था ना, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2 करने से आ गया था. ठीक है। वो नहीं करी थी हमने, इक्वेटर वाली, ये वाली करी. दिस इज द वन वी डेल्ट विद. इसमें भी सेम सिचुएशन, यू कैन पुट इट इक्वल टू B cos delta and finish it off. रिमेंबर वर्टिकल कंपोनेंट अभी भी पिक्चर में नहीं आएगा, वो अर्थ के अंदर है सीधा. जो भी कैंसलेशन न्यूट्रल पॉइंट की है वो हमेशा BH से होती है. ठीक है। सही है. हम्म। एनी क्वेश्चंस इन योर माइंड? नहीं। Okay, what is declination? Define. The angle between magnetic meridian and geographic meridian. Geographic meridian. ठीक है। Okay. What is the other name given to the angle of inclination? Dip. चाय की डिप डिप नहीं होती? हाँ यस सर। डिप. डिप माने डिप हो जाना, ऐसे नीचे की तरफ चले जाना. ठीक है। मैं I'm just saying कि I'm not rushing it through because इसको एब्जॉर्ब करने में वर्ड्स को थोड़ा सा मतलब करने से आएगा, कि खुद भी पढ़ लिया एक बार, फिर ठीक है सुना था, बैठ गया दिमाग में. डिप होती है ये वाली हॉरिजॉन्टल, एक डायग्राम बना लिया अपने हाथ से, स्टफ लाइक दैट. यस सर. All of this is available in NCERT and SL word by word. I haven't created physics. I can just explain it to people. Okay, I haven't written them, so everything is available word by word. Yes sir. Whatever you want to know, just give me 1 second. ये हर जगह चारों तरफ पता है क्या आ रहा है? कोर्स इज रिड्यूस्ड. हाँ वो तो क्या हो रहा है? बढ़ाने की जगह कोर्स कम होता जा रहा है.
ठीक Yes, sir. करने की जगह वो कोविड ही चल रहा है अभी तक, Hmm. समझ नहीं आई यार. Should have. I will send you the next test of maths. अच्छा. Please continue and mark. And Hmm. especially, I would like to see how you answered theory. देखो MCQ में there is nothing to answer. Hmm. Mainly, problem is the 5 markers, 5 3 marker. markers, Hmm. जहाँ लिखना पड़ता है थोड़ा बहुत. Hmm. ठीक है. So now I'll tell you what is left. We have to do numerical. First, read this first. So I will have a full session on numerical practice of magnetism now. अच्छा. Okay, मतलब full session as in Earth's magnetic field के क्वेश्चन करेंगे अब हम. न्यूट्रल पॉइंट कैसे निकालते हैं, राइट. वी विल डू सम 10-15 न्यूमेरिकल्स. तो आपका हाथ थोड़ा सद जाएगा उसके अंदर, राइट. Hmm. देन आवर लास्ट टॉपिक इज वी विल गो बैक टू द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, जो हमने इंट्रोडक्टरी पढ़ लिया ऑलरेडी. अब हम उसके डिटेल में जाएंगे. थोड़ा उसमें मेमोराइजेशन है काफी सारा, और टर्म्स बहुत सारी हैं. Hmm. So we have to do now numerical practice of Earth's magnetic field. We have to do details of magnetic properties of some materials which we've already introduced. सिर्फ डेफिनेशन लेवल पे पता होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं. डोमेन थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, फिर रिवाइज कर लेंगे. Hmm. ऐसे याद करना है व्हाट आर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स एक्सेट्रा. ओके. Yes, sir. And then last topic is called as hysteresis, which is very theoretical type of topic. And then you have permanent magnets and electromagnets, which is just an application of hysteresis. अच्छा. Okay, so I think another 4 classes or so, and we will be done. So which means today is what day? आज Monday. Monday. So I think Wednesday night, maximum Thursday, this chapter will also finish for good. Khatam. Okay. ठीक है? ठीक है, sir. Then what is the next chapter we will pick up? How good you are in alternating currents? कुछ बहुत अच्छा तो नहीं है. मैं सिखा दूंगा. Hmm. इसका एक्सपर्ट हूं मैं. ठीक है? ठीक है. I will teach you alternating current after that. Easy chapter, lengthy chapter. Easy है लेकिन अच्छा. बहुत. I'll make you an expert in this also. Nothing to worry. ठीक है. So you would know कि we have made very good progress in class 12th. Hmm. और ठीक ठाक मतलब पेस है हमारी, सही जा रहे हैं हम. So Okay. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक alternating current होने के बाद how many chapters? 7 चैप्टर हो जाएंगे हमारे. Hmm. है ना? Then EM Yes, waves sir. is a very small chapter, and atoms and nucleus is very easy. Dual nature is very easy. There are only 2 chapters which I believe are slightly exhaustive in theory. वो भी एक उनमें से एक ही है जो वेव ऑप्टिक्स है. बाकी आई थिंक द रे ऑप्टिक्स में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लंबा होता है थोड़ा, which is more of microscope and astronomical telescope. And then EM waves is very short. Atoms and nucleus is very short. School में takes you 15 periods to do atoms and nucleus. Atom nucleus. ठीक है? And optics takes 30 periods to complete. But उनके पीरियड मुझे मालूम है क्या होता है उसमें. Anyway, so we are almost moving toward inching towards closure. धीरे धीरे. Yes, sir. So once we do AC, and we will do one more chapter of EM waves. EM waves है कोर्स में, काट दिया नहीं, है शायद. है. ओके. ये आता जाता रहता है ये EM waves. अच्छा. वो में कम्युनिकेशन सिस्टम्स होता था, शायद वो कट गया है. पहले होता था वो बहुत तो पहले. कब वो बहुत तो पहले की possible. बात है. या Hmm. इट्स गॉन. सो वी विल डू AC and then we will do EM waves. ठीक है. ठीक है? And then I will come back to maths again. I want that at a certain threshold we are done with class 12th and you have this complete control on the course then. Hmm. है ना? अपने आप पूछना भी हो दोबारा. Yes, sir. And then I will start doing 11th. And especially ठीक. those topics I will pick up which are useful.
ओके। immediately, right? We won't be able to do whole of 11th, बहुत मुश्किल हम्म। होगा, वो तो लेकिन है नहीं। जितनी हम कर सकते हैं करते हैं. So just be realistic. अगर यस सर। if you try to do too much of 11th, वो पॉसिबल too नहीं। much, तो गड़बड़ हो जाएगी. जितना So भी be very करेंगे वो भी focused बेकार in होगा। हाँ। 12th 11th के करने में कि भाई हम्म। हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करनी पड़ेगी, ये वाले हमें करने ही पड़ेंगे. We don't have a choice. We will do यस। those. ठीक है। But we will not go to that level कि बस we are getting stuck for 6 months in 11th standard. इतना टाइम नहीं है. हम्म। So, and we also need to ensure that we are doing well in 12th standard. मतलब you are doing good in your mock exam and all that. यस सर। And getting your time to get read it, clear your doubts. नहीं तो उलझ ठीक है। जाओगे 11th के अंदर बहुत ज्यादा. हाँ। करना है लेकिन एक फोकस तरीके से करेंगे 11th. 12th में there is no compromise. 11th we will compromise a bit. ओके। कुछ सिलेक्ट कर लेंगे, कुछ छोड़ना पड़ेगा हमको. हम्म। ठीक है ठीक है जी. सर। तो यस सर। let's practice tomorrow Earth's magnetic field. And agar we feel satisfied we have done enough in the next class, then we will do properties of paramagnetic. So Thursday I'm hoping this chapter is finished. ओके। Chalo, see you tomorrow then. Bye. See you in the morning. थैंक यू सर। And I'm oversleeping nowadays. अच्छा। But 2 times it has happened because I ओ। get up sometimes very early in the morning. अच्छा। And then I go off to sleep again, and that is when the garbad happens. If I don't sleep, I हम्म। will not wake up that late. I generally यस। wake up quite early, but अगर दोबारा मैं सो गया फिर। फिर गए भाई. फिर तो मतलब पता नहीं चलता कि उठना 9:15 होता, तो 11:15 उठा मैं जाके हम्म। बेहोश. Then I have to rush for my yoga class, अच्छा। which I don't miss. हम्म। So hopefully we'll meet tomorrow morning like regular class. ओके ठीक है। All right. Bye. Good थैंक night. यू।